हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी शुरू होगा। आपको बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी वहां पर अशरफ गनी के साथ पहुंचे। अफगान राष्ट्रपति के साथ वहां पहुंचकर उसका ऑफिशियल उद्घाटन किया गया। फिलहाल अशरफ गनी का संबोधन चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर फोटो अपॉर्चुनिटी की है, जहां पर तमाम 40 देश जो इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, सबके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और एक ही ऑफिशियल फोटोग्राफ यहां पर खींची जाती है, जिसके बाद तमाम लोग कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़े, उस हॉल की तरफ बढ़े जहां पर ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। भारत के साथ साझेदारी को अहम मानते हुए अशरफ गनी यहां पर संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता होना बेहद जरूरी है। तो ये तमाम बातें यहां पर की जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की अब बात कही जाती है। क्या कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है या सिर्फ चेतावनी दी जाती है? ये तमाम अहम पहलू हैं जो कि आगे देखने को मिलेंगे। साथ ही इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का भी, किस तरह का मैसेज आज पाकिस्तान को दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें, कल 4 देशों के विदेश मंत्री से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी और तब भी साफ तौर पर कहा था कि आतंकवाद और हिंसा को खत्म किए बिना आगे किसी भी तरह की चर्चा, आगे किसी भी तरह की साझेदारी नहीं हो सकती है। यह सीधा संकेत पाकिस्तान के लिए था। सरताज अजीज भी वहां पर मौजूद थे, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं, और वो भी उस वक्त मौजूद थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक की बातें आतंकवाद के खिलाफ कही है। यही इस हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का एजेंडा भी है। अब देखना यह होगा कि क्या रेजोल्यूशन दिया जाता है, एक, और दूसरा ये कि पाकिस्तान इसे कितना ज्यादा अडॉप्ट करता है, उसका क्या रुख होता है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार इन बातों को नकारता ही रहा है कि वो स्पॉन्सर कर रहा है आतंकवाद को। लेकिन अफगानिस्तान कई बार खुले तौर पर कह चुका है, भारत लगातार कहता आ रहा है, और अब ये हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो हो रहा है, इसमें किस तरह का रुख आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया जाता है, ये भी अहम होगा। राहुल सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल, एक और अहम चीज ये भी है कि भारत तो आतंकवाद से पीड़ित है कई दशकों से, और वो लगातार पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराता आया है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो ये नई दोस्ती हुई है, अफगानिस्तान का जो साथ भारत को यहां पर मिला है, खुलकर वो ये बोल पा रहे हैं और विश्व पटल पर भी एक मजबूती मिली है इस दोस्ती के जरिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों ही इस चीज़ से पीड़ित हैं, आतंकवाद से पीड़ित हैं, और ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान को लेकर के भारत ने पिछले लंबे वक्त से बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग किया, और न सिर्फ विकास में सहयोग किया है, उसकी बाकी जो स्थितियाँ थी, जो हालात थे, उसको मजबूत करने में भी भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जिसको अफ़गानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर स्वीकार किया भी है। ऐसे हालात में अब अगर ये दोनों देश मिल करके अपने सबसे करीबी पड़ोसी पर ये सवाल खड़े करते हैं कि देखिए, हम आपकी वजह से ही इस पूरे रीजन में अस्थिरता है, आपकी वजह से लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, आपकी ज़मीन से आतंकवादी हमारे देश में पहुंचकर लगातार आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाती हैं, और चूंकि यहाँ तो हार्ट ऑफ एशिया में बांग्लादेश नहीं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी लगातार ये बातें कही जाती रही हैं, तो तीनों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है अपने पड़ोसियों से, और ये तीनों ही पड़ोसी कम से कम इस मामले में एक साथ हैं कि आतंकवाद को लेकर के सिर्फ और सिर्फ दिक्कत परेशानी पाकिस्तान की तरफ से अपने हर पड़ोसी के घर में पैदा की जा रही है। लेकिन सवाल, नंदिता, बार बार यही है कि पड़ोसी बार बार ये बात कह रहे हैं, भारत लगातार बड़े बड़े दस्तावेज़ों के साथ में सबूत सौंप चुका है, लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें होती हैं, उन पर कहीं कोई किसी तरीके की लगाम नहीं लगती है, बल्कि लगातार ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा नगरोटा में जो आतंकी हमला हुआ था, और लगता नहीं है कि पाकिस्तान पर कोई फ़र्क इस तरीके का पड़ने वाला है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस तरीके के समिट्स या कॉन्फ्रेंस में फ़र्क पाकिस्तान पर तभी पड़ेगा जब कोई किसी तरीके का ऐसा रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे खासतौर से आर्थिक पहलुओं पर कोई ऐसे प्रतिबंध ज़रूर देखने को मिले जिससे पाकिस्तान को लगे कि उसको नुकसान हो सकता है, उसके लिए दिक्कतें, उसके लिए परेशानी ज़्यादा हो सकती हैं। पर क्या इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे कोई प्रस्ताव पास होंगे? हालांकि भारत की तरफ से कोशिश ज़रूर है कि इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ सारे सदस्यों को मिलाकर के कुछ ऐसा ज़रूर किया जाए जिससे कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। बिल्कुल राहुल, तो क्या इनकी पावर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, कितनी पावर इन सम्मेलनों में होती है? ये लोग मिलके क्या आर्थिक रूप से सिक्लूड कर सकते हैं, कूटनीतिक रूप से सिक्लूड करते हैं? कितना दायरा इस समिट का होता है या इन तमाम देशों का साथ आने से होता है? देखिए, वैसे अगर हम हार्ट ऑफ एशिया की बात करें तो यहाँ तो कोशिश है अफ़गानिस्तान के विकास को लेकर के, कुछ ट्रेड रूट्स को लेकर के, वहाँ कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, एक एजेंडा ख़ास तौर से अगर हम इस बात को लेकर के कहें तो ऐसा होता तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सदस्य देश चाहें
तो इस तरीके के कोई एजेंडा ज़रूर लेकर के आ सकते हैं जिसमें देखा जाए कि इन सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा है जो कि सबके लिए अस्थिरता पैदा कर रहा है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है इस पूरे रीजन की और बेहतर हो सकती है, सिर्फ इसकी वजह से खराब हो रही है। तो शायद कोई एक ऐसी चीज़ उसके लिए ला ज़रूर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अभी तक फिलहाल कोई ऐसा एजेंडा देखने को या सुनने को मिल नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति कभी पैदा भी नहीं हुई है और अब आतंकवाद के खिलाफ ये तमाम मुल्क साथ में आए हैं। हार्ट ऑफ एशिया समिट हो रहा है, 40 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बनता जा रहा है कि पाकिस्तान हार्बर कर रहा है, पाकिस्तान पनाह दे रहा है आतंकवाद को, और ऐसे में क्या एक्शन उसके खिलाफ लिया जाता है, क्या कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है। कड़ा मैसेज कई मर्तबा दिया जा चुका है लेकिन उससे पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में आज ऐसा क्या किया जाता है जिससे पाकिस्तान को असर पड़े, ऐसा कुछ होता है नहीं होता, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होने वाला है और उससे काफी हद तक साफ हो जाएगा कि क्या दिशा रहने वाली है आज के सम्मेलन की चर्चा में। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि आतंकवाद का खात्मा होना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान का पूरी तरह से साथ मिला हुआ है प्रधानमंत्री मोदी को। और फिलहाल आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस वक्त अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का संबोधन चल रहा है। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन यहां पर होने वाला है। तो इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अशरफ गनी के साथ जाकर गोल्डन टेम्पल में पूजा की थी, वहां पर उन्होंने मत्था टेका था। उसके बाद उन्होंने लंगर में खाना भी खिलाया। ये तमाम चीजें उस दोस्ती की ओर इशारा करती है, उस गहरी दोस्ती की ओर इशारा करती है जो आगे जाकर एक बड़ी कूटनीतिक साझेदारी बन सकती है। उसके बाद आज जब ये सम्मेलन शुरू हुआ है, ये देखना बेहद अहम होगा कि जो कॉमन दुश्मन है उस पे क्या कार्रवाई की जाती है। एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि NSHE डोवल ने कल रात को सरताज अजीज से मुलाकात की थी। आधे घंटे तक ये बातचीत चली थी अजीत डोवल और सरताज अजीज के बीच में। हार्ट ऑफ एशिया समिट में शामिल होने के लिए सरताज अजीज यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि कल रात को NSHE डोवल ने भी मुलाकात की है सरताज अजीज से। क्या बात हुई ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि NSHE डोवल ने मुलाकात की है कल रात को सरताज अजीज से। कल रात ही सरताज अजीज यहां पर पहुंच गए थे और जो 4 देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी उसमें भी शामिल हुए थे। और इस वक्त जो खबर मिल रही है कि देर रात अजीत डोवल ने भी मुलाकात की है सरताज अजीज से। तनाव लगातार दोनों देशों के बीच में बना ही हुआ है, चाहे नगरोटा अटैक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, तमाम सीज फायर उल्लंघन हो, ये मुद्दा बना हुआ है। Your Excellency, Dr. Mohammed Ashraf Ghani, President of the Islamic Republic of Afghanistan, Your Excellency Salahuddin Rabbani, Foreign Minister of the Islamic Republic of Afghanistan, my colleague Minister Sri Arun Jaitley ji, Foreign Ministers, heads of the delegations, ladies and gentlemen, Namaskar, Sat Sri Akal. It is an honor to speak at the inaugural session of the 6th Ministerial Conference of the Heart of Asia, Istanbul process on Afghanistan. And it is a particular pleasure to jointly inaugurate this conference with our friend and partner, President Ashraf Ghani of Afghanistan. Excellency Ghani, for accepting my invitation and for gracing this conference. It is also a great privilege for me to welcome all of you in Amritsar, a city blessed with simplicity, beauty, and spirituality, and abode to the Golden Temple, the holiest shrines of Sikhs. It is a place made sacred by Sikh Gurus who meditated here. It embodies peace and humanism and is open to all people and religions.
Streets and sparks tell stories of great valor and immense sacrifice. It is a city whose character has been shaped by proud patriotism and generous philanthropy of its residents, and by their spirit of enterprise, creativity, and hard work. Amritsar also happens to nurture an old and steadfast connection of warmth and affection with Afghanistan. Among the earliest disciples of the first Guru of Sikhs, Baba Guru Nanak Dev Ji, were Afghans in Kabul in the 15th century. Even today, the shrine of an Afghan origin Sufi saint, Baba Hazrat Sheikh, in Punjab, is revered by all faiths, including visitors from Afghanistan. The flow of trade, people, and ideas through our region has often intersected in Amritsar on one of the Asia's oldest and longest surface arteries, the Grand Trunk Road. Amritsar reinforces the value of restoring connectivity, which is so crucial for the overall growth, stability, and economic prosperity of Afghanistan. Excellencies, ladies and gentlemen, since the turn of this century, the international community has extensively engaged in Afghanistan. Major powers, regional countries, and concerned nations from around the world have cooperated through multiple programs of political, social, military, economic, and developmental support. Our gathering today reaffirms the commitment of the international community to durable peace and lasting political stability in Afghanistan. Our words and actions remain focused at advancing a critical unfinished mission of our time, and that is to help Afghanistan build and strengthen its social, political, and institutional fabric, secure its territory and citizens from external threats, spur its economic and development activity, and stage a stable and prosperous future for its people. Indeed, this is also the intent of this conference, aptly captured in its theme, addressing challenges, achieving prosperity. We have no doubt about the scale of the challenge, but we are equally determined to succeed. The results of our collective efforts thus far have been hard-won but mixed. There have been important successes. Much more remains to be done. The need of the hour is to stand our ground and continue with our line of effort. We must protect and build on the gains of the last 15 years and march ahead. Because at stake is not just the future of Afghanistan that has invested in a vision of development, democracy,
and pluralism. But the peace and stability of this entire region and beyond. Let us also reflect with urgency on what more must be done and what we must avoid in Afghanistan so that its citizens can self-sustain peace and economic growth. The answers are all there. The question is of resolve and action, and of putting Afghanistan and its people first. For this first, an Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled process is the key. It is the only guarantor of durability of solutions. The second, we must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. Terrorism externally induced instability pose the gravest threat to Afghanistan's peace, stability, and prosperity. And the growing arc of terrorist violence endangers our entire region. As such, support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. Silence and inaction against terrorism in Afghanistan and our region will only embolden terrorists and their masters. The third, our bilateral and regional commitments of material assistance for Afghanistan's development and humanitarian needs must continue and increase. Our cooperative endeavors in Afghanistan should contribute to its infrastructure and institutional capacity and self-propelling engines of growth. Fourth, we should all work to build stronger positive connectivity between Afghanistan and other countries of the region. Afghanistan should be at the center of our connectivity networks, not peripheral up to them. On our part, we see Afghanistan as the hub for strengthening links of connectivity between South Asia and Central Asia. We cannot deny that the more connected Afghanistan is with the regional arteries of trade, capital, and markets, the more assured would be its economic growth and progress. President Ghani and I have conversed on the priority of the strengthening trade and transport linkages with other partners in the region. Excellencies, ladies and gentlemen, on India's part, our commitment to our brave Afghan brothers and sisters is absolute and unwavering. The welfare of Afghanistan and its people is close to our heart and our minds. The successful record of our partnership in projects, big and small, in Afghanistan speaks for itself.
The principal dimension of our cooperation has always been its people-centric nature. Our joint efforts educate Afghans, young and nurture their skills, provide health care and improve agriculture, build infrastructure and institutions, and allow traders and small businesses in Afghanistan to connect with immense commercial and economic opportunities in India. And the reach and benefit of such efforts extend to all corners of Afghanistan. Herat's India-Afghanistan Friendship Dam, also called the Salma Dam, that was launched a few months ago, will help revive economic activity for the people there. The Parliament building in Kabul represents our strong commitment to Afghanistan's democratic future. Tehran-Dalaram Highway and India-Afghanistan-Iran cooperation on Chabahar would enable Afghanistan to link its economy with centers of strong economic growth in South Asia and beyond. We also plan to connect Afghanistan with India through an air transport corridor. President Ghani and I have discussed additional measures for deepening our bilateral cooperation. We are making progress in developing plans for utilization of the additional $1 billion earmarked by India for capacity and capacity building in Afghanistan. It will extend to areas like water management, health, infrastructure, energy, and skill development. As India implements its additional commitments, we are open to work with other like-minded partners for the development of Afghanistan. We are also happy to note the international commitment at the Brussels conference in October and NATO's Warsaw Summit in July this year. We will continue efforts to scale up our ambition and dedication to assist Afghanistan. In this, we draw upon lessons learned and best practices derived from our shared experiences in working on projects. Excellencies, ladies and gentlemen, let us remember that every passing day we help Afghanistan to achieve successful political, security, and economic transition. We are also helping ourselves create a more peaceful region and world. I hope that your deliberations will produce constructive and forward-looking pathways for action that promote cooperation in place of conflict, development in place of need, and security in place of terrorism. Let us rededicate ourselves to making Afghanistan a geography of peace, a place where reason and peace succeeds, progress and prosperity prevails, and democracy and plurality wins. Thank you. Thank you very much. The heart of
एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए, और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही आतंकवाद को लेकर वो ये कि आतंक और उनके आका के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आतंक की बात करने से कुछ नहीं होगा, आतंक के समर्थक पर कार्रवाई करनी होगी। तो सीधे सीधे यहां से पाकिस्तान को एक तरह से संदेश देने की कोशिश, और जो 30 देश के प्रतिनिधि आए हैं उनको यह संदेश देने की कोशिश कि आतंकवाद की जड़ कहां है और आतंकवाद दरअसल आ कहां से रहा है, पल कहां से रहा है।